हरि ओम। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलसंधि गुरु गया गंगा प्रवासे पुष्करणी च एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्ति। ओम विष्णुः अद्य पुण्यहानि ज्येष्ठे कृष्ण चतुर्थ्यां श्रीचन्द्रमसि सुभगे आषाढायं च धन्वंश्री भास्करे च गृहे स्थितौ मेनरी नर्मदे सस्थं चाभिषेकं हरिषयोः वेदादिमन्त्रपाठेन कनकधारया कृतं विश्वं भारतमूढं च गंगा च नर्मदा प्लुतं सस्यश्यामलभारेण पूर्णमस्तु इति मे जगत् गौतमगोत्रजः सर्वे पितृपितामहतृतये भ्रातृभग्न्यादयानं चेत् अकालमस्तु मङ्गलम् भरद्वाजं सजानं च व्यस्तु चिरं सुकुशलं मातृस्वसुस्वगोत्राणां कश्यपवत्ससादिनं गोत्रवंशस्य व्यस्तु सुखसम्पदम् अस्तु च सुखसम्पदं सर्वेषामस्तु कल्याणमाकीर्तब्रह्मपर्यन्तं सोमवासरमाश्रित्य नर्मदेश्वरसमन्दिरे चोत्तरकाश्यनन्तस्य विश्वेश्वरस्य भुवने श्रीकनकेश्वरदेवस्य श्रीबुद्धेश्वरप्रभुश्च स्नापयित्वा च सम्पूज्य नमामि पावनीं खिलां गङ्गां रेवं च कावेरीं गोदावरीं सरस्वतीं सिन्धुं च यमुनां च नमामि सोमवासरे सप्तमातृधरा देवीं सप्तधरा प्लुताधरा सोमवासर सोमय सम्भवेशं नमाम्यहम् कैलासलोचना पुष्यु विघ्नेश्वराशिषार्जिता नर्मदया बुधेशेन कनकेशेन रक्षितः हरि ओम्। अथ यजुर्वेदाः अथ ऋग्वेदाः पञ्चदशसूक्तं प्रथममण्डलाः पञ्चदशसूक्तं हरि ओम्। इन्द्रं सोमं पीवा ऋतुना त्वाभिसन्तीन्द्रावः मत्सरासस्तदोकसः मरुताः पिबत ऋतुना पुत्रा यज्ञं पूनितानयो यंहिष्ठा सुदानव अभियज्ञं गृणीः भोग्वाग्नावो निष्ठाः पिबा ऋतूना त्वं हेरात्मधा असि अग्ने देवां इहावः साधया योनिषु त्रिषु परिभूषपीव ऋतून ब्रह्मणादिन्द्राराधासाः पिबा सोमामृतून् रानु कावेधि सख्यामास्तृतम् युवं यख्यं धृतव्रतमित्रावरुणा सूक्तं ऋतुना यज्ञमासाथे द्रवीणो द्रवीणसो ग्रावहस्तासु अध्वरे यज्ञेषु देवमिल्लाद्वे द्रवीणो ददधातु नो वसूनि यानि शृणीरे देवे
श्रुतावनामहे द्राविणो दाहापि कीशाति जुहोता प्राचातिष्ठात मेष्ट्राद्रुतोभिरिष्यत यत्त्वा तुरीया भ्रूतुर्विर्द्राविणतो यजामहे आधस्मान् दधिर्भव अस्मिनापीबतं मधु दिव्यग्नि शुचिव्रता ऋतु न यज्ञवाहस गार्हपत्येन सन्त्य ऋतुना यज्ञनिरसि देवान् देवयते जज। ओम अथ यजुर्वेदः मंत्र द्वाविंशतोऽतः षड्विंशति संवं संवारीरंथा गुंह ईशा भूतेन समादितिर्वसुभिः समारुद्भिः समिन्द्रो विश्वदेवोभिरन्तं दिव्यं नमो गच्छतु यत् स्वाहा कास्त्वाभिमुञ्चति स त्वाभिमुञ्चति कस्मै त्वाभिमुञ्चति कस्मै त्वाभिमुञ्चति कोशाय रक्षसं भागोऽसि। संवर्चसा पयसा संकानुभिराग्नाहि मनसा सा गुंसिवेन त्वष्टा सुदात्रो विदधातु रायोनुमाश्रुतन्वो यद्विलिष्टं दिवि विष्णुर्व्याक्रागुंस्तजागतेन छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्वेष्टि यञ्च वयं विष्णोऽन्तरीक्ष्य विष्णुर्व्याक्रंगुंस्तात्रिष्टाष्टुवेन छन्दसा ततो निर्भक्ता जोऽस्मान्वेष्टि यं च वयं विस्मः पृथिव्यां विष्णुर्व्याक्रांगुंस्तगायत्रेण छन्दसा ततो निर्भक्तो योऽस्मान्वेष्टि यं च वयं विष्णोस्मादन्नादस्यै प्रतिष्ठाय अगन्म स्वाहा संज्योतिषा भूमा स्वयं भूरिसि श्रेष्ठो रश्मिर्वर्चोता असि वर्चो मे देहि सूर्यस्याभूतमन्वावर्ते। अथ सामवेदो पूर्वार्चिकम् ऐन्द्रपर्वा खण्ड तृतीयः इहेव शृण्वा एषां कसाहस्तेषु ददवदानीयामं चेत्रमृञ्जते इम ऊत्वा विचाख्यते सखाय इन्द्र सोमिनः पृष्ठावन्तु यथा पशु सामस्य मन्यवे दिशो विश्वानं मन्तपृष्ठय समुद्रायैव सिन्धवः देवानामीदवो महत्तदा गृणीमहे वयं कृष्णामस्मभ्याभूतये सोमानागुंस्वरो स्वरान् कृणुहि ब्रह्मणस्पते ककीवन्तं य औषिजः बोधन्मन्नागिदस्तूनु रुद्राः भूर्यासुति शृणोतु सत्र आशिषम् अद्यानो देवसविता प्रजावस्सानीः सौभगं पराजु स्वप्न्यागुंसुव क्वस्यवृषभोज्व तुर्विग्रो ग्रीवो अनानत ब्रह्मकस्ताङ्गुंसपर्जति उपह्वरे गिरिनागुं सङ्गमे च नदीनां धियाभितो अजायत प्रासंराजं च शनीनामिन्द्रागुं स्तोतानप्यङ्गिभिः नारं रोषाहङ्मा गुंहिष्टम्। अथ अथर्ववेद प्रथमखण्डः पंचदश सूक्तम्
संस्रवन्तु सिन्धवः संवाता संपतत्रिणा इमं यज्ञं प्रातिभो मे जुषन्ता संस्रावेण हविषा जोहोमि इहैव हवमायात मह्य संस्रावणा उद्यमं वर्धयता गिर इहै तु सर्वजो पशुरस्मिन् तिष्ठतु जारैः येन दिनं संस्रवन्तु सादमच्युतः तेभिर्मे सर्वि संस्राविर्धानं संस्रावयामसि ये सार्पिषा संस्रावन्ति किरस्य चोदकस्य च देभिर्मे सर्वि संस्राविर्धानं संस्रावयामसि। अथ श्रीमद्भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः श्लोक 29 ततः 31 यावत्। ओम आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन नाश्चर्यवद् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमबोधयं देहे सवास भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तं सूचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चाधिक्य नाभिकल्पं पितुर्मर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। हरि ओम ब्रह्मेण महार्वतमदं ऋषिंगं विषाणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम श्रीलक्ष्मीसिंहाभ्यां नमो नमः। सप्तम विक्रमसिंहेन सप्तम के महालक्ष्मीनमोस्तुते। हरि ओम अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गने मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गे कृताखिल विभूतिरपङ्गलीला मङ्गल्यगास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा भूर्विदधति वदने मुरारे प्रेम कृपा प्रणिहितानि गतानि नालाधृतोर्मधुकरीव महोत्पलेय साने श्रियं सुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदवी ब्रह्मदानदख्या नानन्दहेतुरधिकम्बुरभिद्विषोऽपि ईशानिशीलतु मही घनदीक्षणार्म बिन्दी वरोदर सुहोदर निन्दिराय आदिनिपायमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकं नमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आके करास्थितकलेलिकभट्मनेत्रम् भूतेर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गराय बाहुवन्तरे मधुरितासितकौस्तुभेया आरामलेव हरिनीलमयी विभाति राम प्रजाभगवतो विकटैक्यमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुलालिलितोर्जगैत्रभारे धाराधरे स्फुरतिजागर्यङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्ति निर्भद्राणि मे शुभार्तवनन्दनाय प्राप्तं परं प्रथमतः किल जगत्प्रभावन् मङ्गल्यवाजमजमाजनिमन्मदेन मज्जामन्तरमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालय कन्यकाय दद्यादयानुपमनोद्रविणं बुधार मस्मिन् किञ्चिद्विहङ्गशिशुविशमे दुष्कर्मकर्ममपनीयचिराय दूरं नारायण प्रणयनीनयनं भुवः इष्टाविशिष्टमुतविजया जयान् दृष्ट्या त्रिकृष्णसुलवल्लभन् दृष्टिकौशकमलदीप्तिरिष्टन् पुष्टिप्रशिष्टमो पुष्करिष्टाय गिरिजे भजेति गरुडाधुसुन्दरीति साकं भजेति शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयसंस्थिताय तस्य नमस्त्रिभुवने गुरुस्तरुणे श्रुतिनु सर्वकर्म फलाप्रसूति रजगुणान्नवाय सत्यन्मसतपतनिकेतनाय पुष्टिन्म पुरुषोत्तम बलवाय नमोस्तु नालिके निवारणाय नमोस्तु दुग्धजन्मभूते नमोस्तु सोमनाथप्रसूदाय नमोस्तु नारायणवल्लभाय संप्रगणानि संप्रदानविसमोरायति सर्वदुर्गतारुणे मामे मात्रं गणमन्ये यत्कटके धर्मवासना विनिशपकसंगमनशिष्टं मदर्मणे सरासीजनील सरहस्ते धवलकरमां सुगन्धमनशिवे भगवती हरिवल्लभमन्ये त्रिगुणमतिप्रतिमायं विद्युष्टिविकनकुममुखावसुसुसुवजन प्रातर्नमामि जगतं जननीमशेष लोका जनाः गुरुविनमनं कमले कमले बले वेतं करुणापुरद्रं अवलोकनं किञ्चनानं प्रतिपातमग्रजय सुगन्धिजे सत्विरं भोहिरण्वन्
त्रयमयी किंजनमद्रमां मुनिजितकृत्रभाग्यभागिनी भवन्ति तपोपि बुद्धवान् सुवर्णधरसुजासमरानिर्मितं त्रिशूलजापरियुक्तं सर्पगरसंभवत् इति श्रीमहाशङ्कराचार्यविजयकर्णजारासुतसम्पन्नम् ओं शङ्करशङ्करात्मने नमो नमः ओं गुं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमो नमः ओं गुरुदेवाय नमो नमः ओं गुरुदेवाय नमो नमः ओं गुरुशङ्कराचार्याय नमो नमः आदिशङ्कराचार्याय नमो नमः ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरवे नमो नमः ओं नमः ओं त्रयम्बकं यजामहे शरण्यं त्र्यम्बकं गौरवारोहमे मुक्तिमुक्तिमान् ओं नमो नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः बुद्धेश्वराय ओं नमो नमः कामेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः मेनेरी नर्मदेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः मेनेरी गंगाधराय नमो नमः ओं नमो नमः ओं नमो नमः कैलासराय नमो नमः ओं नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः सोमनाथाय नमो नमः ओं नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः ओंकारेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः कृष्णेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः ओं नमो नमः त्रैलोक्येश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः वैद्यनाथाय नमो नमः ओं नमो नमः मल्लिकार्जुनेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः संदेश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः लिंगराजाय नमो नमः ओं नमो नमः लोकनाथाय नमो नमः ओं नमो नमः ईश्वराय नमो नमः ओं नमो नमः विक्रमेश्वराय नमो नमः ओं नमो विश्व कल्याणकर्त्री नमो नमः ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वारोग्यमे मुक्तिमुक्तिमान् नमो नमः बुद्धेश्वराय नमो नमः ओं कामनेश्वराय नमो नमः कामना महादेवाय नमो नमः ओं उग्रवीरमार्वातामृगं सिंहं नमामि ओं सप्तमृत्युर्षियेन सप्तमृत्युर्महालक्ष्मी नमस्ते हरि ओं नमस्ते महामाय श्रीपीठेश्वर पूज्यते सकलकर्गनास्ते महालक्ष्मी नमस्ते नमस्ते गरुडारूढे कुलासुर भयंकरी सर्व पापहरदेवी महालक्ष्मी नमस्ते ओं श्रीलक्ष्मी सिंहवे नमो नमः सर्वविध कल्याणं कुरु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओं श्रीलक्ष्मीनारायण नमो नमः ओं श्रीलक्ष्मी सिंहवे नमो नमः ओं श्रीनारायण नमस्ते ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वारोग्यमे मुक्तिमुक्तिमान् नमः शिवाय ओं महादेवाय नमो नमः ओं कामेश्वराय नमो नमः ओं कामेश्वराय नमो नमः मेनेरी स्थित कामना महादेवाय नमो नमः ओं कामना महादेवाय नमो त्र्यम्बकं यजामहे ओं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं सर्वारोग्यमे नमो नमः हरि ओं नमो नारायण नमस्ते गुणारूढे गुणासुर नमो नारायण नमस्ते गुणारूढे ओं संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं